Hey guys, क्या हाल चाल? So I am back with the second video of this Supreme Court case series. In the previous video, if you remember, I talked about the Golaknath case. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो you can go back and watch that particular video. In this video, I will talk about the Minerva Mills case of 1980. उस केस में क्या हुआ था? What were the implications in that particular case? Just to give you a brief background story of what happened. मिनर्वा मिल्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको कि 1974-75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया ऑन द चार्जेस की कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है एंड दैट इज इम्पैक्टिंग द एंटायर इकोनॉमी. नाउ ऑब्वियसली द कंपनी वुड नॉट लाइक इट और जो कंपनी के ओनर्स थे वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ओवरनाइट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप कैसे टेक ओवर कर सकते हैं. नाउ दिस वॉज वॉट द मिनर्वा मिल्स केस वॉज 1980 में. The judgment of the Supreme Court in the Minerva Mills case contained two very important points. The first point, and both the points were actually regarding the 42nd Constitutional Amendment Act. This particular Amendment Act, if you remember, was introduced when India was going through an emergency period, and the government led by Indira Gandhi was introducing a number of changes in the Constitution. तो 42nd Amendment Act वहीं पे आया था. उसमें there were two specific sections जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55. लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट सेक्शन 55. सेक्शन 55 में गवर्नमेंट ने और जो पार्लियामेंट में लॉ पास किया था उसमें ये कहा गया था कि एनी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर्स को कम कर दिया गया था. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे वो जुडिशियल रिव्यू से ऊपर ले आए गए थे, which was a violation of the केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस में कहा गया था द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. सो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 55 को हटा दिया यहाँ पे और कहा कि यू कैन नॉट टेक अवे जुडिशियल रिव्यू पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये तो पहली चीज़ हुई. सेकेंड थिंग जो मिनर्वा मिल्स केस में हुआ वो था सेक्शन 4 को हटाया गया ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब सेक्शन 4 क्या था? इन दिस सेक्शन 4 the government had introduced this provision कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39B और 39C इन दोनों के लेकर के कोई भी लॉ आता है तो वो हर फंडामेंटल राइट से ऊपर माना जाएगा. मीनिंग दैट द गवर्नमेंट गेव प्रेसिडेंस टू आर्टिकल 39B एंड 39C ओवर ऑल द फंडामेंटल राइट्स. दिस वॉज अगेन स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, दिस कैन नॉट बी द केस. These two directive principles can only be given preference over fundamental rights of Article 14, 19 and 31 and not other fundamental rights. So these are the two major decisions given by the Supreme Court in the Minerva Mills case. Just to reiterate, in the Minerva Mills case, Supreme Court ने दो judgment दिए थे. First judgment was कि Section 55 of 42nd Constitutional Amendment Act उसको हटा दिया गया था, where the Supreme Court said judicial review power of the Supreme Court cannot be taken away because it is a part of the basic structure of the Constitution. Second, सेक्शन 4 को हटाया गया था जिसमें कि सेक्शन 4 में था कि 39B और 39C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सारे फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा जाएगा. However, that was changed and the Supreme Court said these two directive principles can only supersede fundamental rights of Article 14, 19 and 31 and not other fundamental rights. So this is it about the Minerva Mills case. I will be back soon with another case. उसके अलावा as you would have noticed, I have recently announced that I am starting with a crash course for prelims 2019. So if you are appearing for 2019 prelims and want a quick revision of whatever you have studied, you can enroll for that course by giving me a WhatsApp or call on this particular number which is flashing on the screen right now. If you have any questions, do let me know in the comment section below, guys. Thank you. Bye.